Hello students, this is a class for BA part 2nd and we will be doing the poem Winter by James Thomson. As you know, James Thomson was a pre-romantic poet and he has written the seasons, and winter is a part of this larger poem season. In this poem, the poet has talked about the season winter. The aspect of winter season is presented in the poem. Let us see the poem. With the fierce rage of winter, deep suffused. The poet describes actually the frost at the night during the winter season. Fierce rage of winter. Fierce means terrible, very strong. Rage means anger. So very when winter is in a very strong anger, deep suffused, deeply suffused means stuffed. विंटर में जब तेज गुस्सा भरता है तब क्या होता है? लुक एट द इफेक्ट ऑफ दैट एंगर ऑफ विंटर. एन आईसी गेल. गेल मीन्स विंड, तेज हवा को बोलते हैं. तो आईसी गेल. Remember, we are talking about the season winter in England. In England, you know, winter is very terrible season. So an icy gale, a wind which is full of, you can say, icy cold. It's very chilling. ऐसी हवा, often shifting, and because the wind is strong enough, it often shifts over the pool. It moves over the pool. The scene is कि there is a pool, and on that pool, the effect of the wind, the poet wants to show. So an icy gale breathes a blue film, a very you can say chilling blue film. Film means a thin layer. So a blue film means it wants to show the chilling effect of the wind over the pool, over the water. So breathes a blue film, and it's mid carrier. Mid carrier means by the time the water, the waves reach to its middle of the pool, it arrests the bickering stream. The wind, which reaches up to the middle of the pool, arrests means it freezes the bickering stream, the stream which has been uh, bickering. Bickering means it roaring or gurgling sound. तेज आवाज करती हुई जो स्ट्रीम है उसको it arrests, it freezes. The loosened ice. और अभी इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि it is completely frozen. Loosened ice की फॉर्म में the water comes. Let down the flood. The flood which has been flowing freely, strongly, it lets it down means इसकी स्पीड कम हो जाती है. It breaks the speed of the flood. And half dissolved by day. और दिन में आधी डिजोल्व हो करके, पिघल करके. Rustles no more. There is no rustling sound in the water. But to the sedgy bank. कहाँ तक पहुँचती है? Bank. Bank means the shore of the pool. And sedgy banks. Sedgy means sedge is actually a kind of grass that grows by the side of a river. So the sedgy bank fast grows. Up to that area, up to the sedgy bank, it fast grows or gathers around the pointed stone. There must be some pointed stones lying on the pool side, on the रिवर साइड, और वहाँ उसके चारों तरफ गैदर्स अराउंड ए क्रिस्टल पेवमेंट. ऐसे लगता है जैसे एक क्रिस्टल पेवमेंट, ए पाथवे इज मेड विच इज क्रिस्टल क्लियर.
by the breath of heaven. और ये हुआ किसके कारण है? Because of the wind. It is the effect of the wind. By the breath of heaven, cemented firm. It cements it firm. It joins the ice firmly. कब तक? Till seized from shore to shore. Seize means capture, पकड़ना. Seize कर देना, arrest कर देना. From shore to shore means from one bank to another bank, to one shore to another shore of the river. एक किनारे से दूसरे किनारे तक. The whole imprisoned river, the river which is imprisoned by the icy wind, growls below. नीचे से गर्गलिंग साउंड पैदा होता है, ऊपर बर्फ जमी हुई है. Loud rings the frozen earth. The earth is also frozen and it rings loud, and hard reflects a double noise. And it reflects means echoes. It echoes in a very high tone with a double noise, while at the same time at this evening watch, शाम को evening watch पे, the village dog, the dog, the rustic dog, deters means stops the nightly thief. Means the dog is barking to stop the nightly thief. Generally, in winter season, winter season is called the season of thieves because people sleep early. It is chilling cold, so they do not come out of their beds, and it is an opportune time for the thieves. वॉट एल्स? द हाइफर लोज. हाइफर बछड़े को कहते हैं. तो काउ से कहीं ज़्यादा ठंड किसको लगेगी? हाइफर्स को. तो दे लो इज एक्चुअली ए टेक्निकल वर्ड. लो मीन्स बछड़े का रंभाना. द लोइंग साउंड ऑफ द हाइफर. द डिस्टेंट वाटरफॉल्स. द डिस्टेंट वाटरफॉल्स, दूर कहीं, फार ऑफ, waterfall swells in breeze. Now look at the effect of this icy gale. शुरू से अपन बात कर रहे हैं icy gale की, बहुत तेज ठंडी हवा की. तो now the effect of this icy gale upon the waterfall. The distant waterfall swells in breeze because of this breeze. Breeze means हवा. उसके कारण वो फूलता है, फैलता है. हवा वाटरफॉल को फैला देती है. एंड विद द हेस्टी ट्रीट, फास्ट ट्रीट, वॉकिंग वेरी फास्ट, द ट्रेवलर, द होलो साउंडिंग प्लेन शेक्स फ्रॉम अफार. The plane, because he is the only passenger, he is the only traveler on the road. Therefore, it appears as if the plane, मैदान जो है, it sounds, it echoes and shakes from afar. धरती ऐसे लगता है जैसे हिल रही हो. Because he is the only passenger or only traveler. The full ethereal round. The ethereal round is used for moon. Infinite worlds disclosing to view. And infinite world. Infinite means endless, anant, aseem world, disclosing to the view. It appear before your eyes, shines out intensely and keen. Both the words mean intensity of the shining of the moon and all one cop. Cop is actually canopy. Cop is actually canopy, or you can say the vestment. कैनोपी की तरह से आसमान में छाई है ऐसा. And all one cop of starry glitter. Stars glitter in the sky, and the sky appears as if it were an umbrella over the earth, which is studded with glittering stars. Glows from pole to pole, from one pole to another pole. Now North Pole to South Pole, this starry glitter studded sky, which has beautiful moon on it, is seen there from pole to pole. The poet continues, from pole to pole the rigid influence folds.
the rigid influence of, rigid means hard, तो ये जो हार्ड इन्फ्लुएंस है किसकी, ऑफ विंटर, फॉल्स थ्रू द स्टिल नाइट, incessant, incessant means continuously, heavily and strongly throughout the still night. The night will be calm, but during this night, still night, incessantly, heavily, strongly, from pole to pole, the rigid influence of winter continues to fall and seizes nature fast. It arrests, it controls the nature fast. कैसे? What is the effect? It freezes on. On जिसके भी साथ लगता है कंटिन्यूटी को बताता है. तो it freezes on means it continues to freeze all the things in nature. कब तक करता रहता है फ्रीजिंग? टिल मॉर्निंग. Till morning, late rising over the drooping world. ड्रूपिंग वर्ल्ड, ड्रूपिंग मीन्स लैंग्विशिंग, आलस्य में जो है ऐसी दुनिया. सुबह इन द विंटर्स पीपल जनरली डू नॉट गेट अप फ्रेश, दे सी एंड दे आर टायर्ड. तो लेट राइजिंग ओवर द ड्रूपिंग सन लिफ्ट्स हर पेल आइज, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है कौन? दुनिया. कैसे? अनजॉयस, दे आर नॉट वेरी हैप्पी टू गेट अप, and the eyes are also described as pale. Then appears the various labor of the silent night. और उसके बाद you see the labor of the silent night. What is the labor? What is the hard work? You will see in the next lines. Prone from dripping cave. Cave से जो ड्रिप होता है पानी वो. And dumb cascade. एक जगह से दूसरी जगह की तरफ. हुज आइडल टॉरेंट्स, टॉरेंट मीन्स फ्री फ्लो ऑफ वाटर, ओनली सीम्स टू रोर. जहाँ पे आपको यूँ लगता है कि पानी लगातार बहुत तेज़ बरसता है, वहाँ पे रोरिंग साउंड ऑफ द वाटर जो टॉरेंट्स में बहता है. टॉरेंट्स मीन्स बहुत तेज़ बरसने वाले को. द अब वहाँ क्या हो गया है? द पेंडेंट आइसिकल्स, ऐसे लगता है जैसे लटके हुए आइस के क्यूब्स बन गए हैं. पानी जो ऊपर से नीचे बहता था कास्केड से, केव से, वो अब क्या बन गया है? पेंडेंट बन गया है, मतलब लटका हुआ बन गया है. आइसिकल्स, पेंडेंट मीन्स पेंडुलम की तरह से, और जो जो लटकता है उसको पेंडेंट बोलते हैं. तो पेंडेंट आइसिकल, यू सी द फ्रॉस्ट वर्क फेयर, द फ्रॉस्ट इन द नाइट वर्क ब्यूटिफुली. कैसे? वेयर ट्रांसिएंट ह्यूज, ट्रांसिएंट मीन्स आर पार जिसके देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट ह्यूज मीन्स कलर्स, एंड फैंसीड फिगर्स राइज. और उन आइसिकल्स में यू कैन सी फैंसीफुल फिगर्स, मीन्स यू कैन इमेजिन वेरियस फिगर्स made in those icicles, wide spouted over the hills. The frozen brook, the brook is actually जो नाला है वो, वहाँ से जो हिल के पास से जो नाला गुजरता है, दैट इज़ फ्रोजन. वाइड स्पाउटेड, जो बहुत तेज़ बहता था, कभी स्पाउट की तरह से बहता था, वो आज फ्रोजन ब्रूक हो गया है. ए लिविड ट्रैक्ट, एक ऐसा ट्रैक बन गया है. कोल्ड ग्लीमिंग ऑन द मॉर्निंग, जो ठंडी सुबह पे ग्लीम कर रहा है. ग्लीम मतलब शाइन कर रहा है ऑन द मॉर्निंग. द फॉरेस्ट, अब अगर आप जंगल में जाएं तो फॉरेस्ट बेंट बीनीथ द प्लूमी वेव, जो वेव्स हैं, प्लूमी वेव जो हैं, उन पर झुक करके. एंड बाय द फ्रॉस्ट रिफाइंड द विंटर स्नो, फ्रॉस्ट के कारण जो विंटर स्नो गिरी है इन द फॉरेस्ट, इनक्रस्टेड हार्ड, और वो क्रस्ट की फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, कंजील्ड फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में है वो. साउंडिंग टू द ट्री, जब आप चलते हैं तो
sounding to the treads of early shepherds. Shepherds come in the morning, and when they tread, when they walk, it echoes. Sound करता है because it is made of ice. The path is made of ice. बर्फ से बन गया है रास्ता, बर्फ गिरने के कारण, तो वो शेफर्ड की ट्रीड से साउंड करता है. एज ही पेंसिव सीक्स हिज पाइनिंग फ्लोक. पेंसिव मतलब अनजॉयस. पीछे एक शब्द आया था अनजॉयस. पेंसिव मीन्स सैड, मेलंकली. तो बहुत खुश नहीं है वो अपनी इस मॉर्निंग ड्यूटी से. ही सीक्स, वो ढूंढता है. हिज पाइनिंग फ्लोक. फ्लॉक मीन्स रेवड़, उसका जो झुंड है ऑफ कैटल, जानवरों का. और जानवरों के झुंड के लिए, फ्लॉक के लिए भी क्या लिखा गया है वर्ड पाइनिंग. पाइनिंग मतलब दे आर ऑल्सो अनविलिंग टू कम आउट, ऐसा. और तीसरी जगह और बताता है फ्रॉम द माउंटेन टॉप. इफ यू गो एंड सी टू द माउंटेन टॉप, प्लीज्ड विद द स्लिपरी सरफेस, स्विफ्ट डिसेंट्स. वहाँ से भी प्लीज्ड विद द स्लिपरी सरफेस, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना है, इसलिए स्विफ्ट डिसेंट्स द आइस. बर्फ जो है वो स्विफ्टली नीचे की तरफ स्लाइड करती है, पानी स्लाइड करता है, ऐसा. तो इन दिस मैनर it's a beautiful nature scene in the winter time, and this kind of poems were being written in pre-romantic era. And because such poems written on natural themes were being written in this era after the Augustan or Age of Reason in England, therefore, this particular time was considered as pre-romantic age, or James Thomson is considered as the precursor to romantic poetry. That is all for today. Thank you very much. If you have any questions or any doubts, you can ask me on WhatsApp. Thank you.